Hello everyone, my name is Karan Masru. Welcome to this video. And in this video, we are going to look at how we can print 1 to n and n to 1 using recursion, and this is part 2 of it. Okay, so last video में भी हमने 1 से लेके n and n से लेके 1 तक print किया था using recursion. In this video, we will do the same thing but with a bit of variation. Okay, so for example, if this is your main function, and from your main function, if you call the recursive function a, that should do the work of printing 1 to n and n to 1, right? अब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ए में एन पास किया था, राइट? अब इस वीडियो में हम क्या पास करेंगे, हम इस वीडियो में 1, n पास करेंगे. ओके, सो बेसिक आइडिया क्या है कि लास्ट टाइम हमारा जो बेस कंडीशन था वो क्या था, हम एन को जो है वो प्रिंट कर रहे थे आइदर बिफोर द रिकर्सिव कॉल और आफ्टर द रिकर्सिव कॉल, एंड वी वर पासिंग टू द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल n-1, राइट? एंड हमारी बेस कंडीशन क्या थी कि अगर n जो है वो लेस देन 0 हो जाता है, n अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, देन इन दैट केस वी वर रिटर्निंग. इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल पास करेंगे और n को फिक्स रखेंगे एंड इस वेरिएबल को बढ़ाते जाएंगे. ओके, सो दिस इज फर्स्ट 1, देन इट विल बिकम 2, देन इट विल बिकम 3, देन इट विल बिकम 4 एंड सो ऑन अप टिल n. When this variable becomes n+1, at that time we will return. That would be the base condition. Okay, so in general the function would be like this: void a int I int n, and we will print the value of I, and in the recursive function we will call I+1, n. Okay, और बेस कंडीशन क्या होगी, अगर i जो है वो n से बड़ा हो जाएगा, देन इन दैट केस वी विल रिटर्न. ओके, सो दिस वुड बी द जनरल फंक्शन. ओके, अब ये 1 to n प्रिंट करेगा बिकॉज वी आर फर्स्ट प्रिंटिंग i एंड देन कॉलिंग I+1. ओके, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ void, लेट से n इज इक्वल टू 3 हमने मेन में से पास किया. ओके, सो आवर फंक्शन void a, इट वुड बी int, सबसे पहले यहाँ पे i की वैल्यू 1 आएगी, देन int n यहाँ पे ये 3 आएगा, राइट? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन जनरल वे, आई विल राइट इट लाइक दिस 1, 3, राइट? फिर यहाँ पे क्या होगा, इफ 1 इज ग्रेटर देन 3 देन रिटर्न, विच इज नॉट ट्रू, सो वी विल प्रिंट 1, राइट? एंड देन वी विल कॉल a of 2, 3. Right, so now what I will do is I will just copy paste this function. Okay, so let me copy it and let me paste it. Okay, so and let me paste it again. And let me paste it again. ओके, अब इनमें कुछ चेंजेस कर देते हैं. सो दिस वुड बी दिस थिंग्स विल चेंज हियर, दिस थिंग्स विल चेंज एंड दिस थिंग्स विल चेंज, राइट? सो इट वुड बी 2, 2, 2, 3. ओके, this would be 3, this would be 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 एंड 5. सो बेसिकली मेन फंक्शन में से हम सबसे पहले क्या कॉलिंग करेंगे, अगर मान लो n की वैल्यू 3 है, देन वी वुड कॉल 1, 3. सो कंट्रोल विल रीच हियर. नाउ ऑल दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड 1 by 1. इज 1 greater than 3? नो, सो वी विल नॉट रिटर्न, वी विल प्रिंट 1. सो आवर आउटपुट विल बी 1. Then we will call 2, 3. So the control will reach here. Is 2 greater than 3? No. So we will print 2 and we will call 3, 3. Is 3 greater than 3? No. So we will print 3 and we will call 4, 3. Control will go here. Is 4 greater than 3? So we will return. So we will return here. Now there is nothing to execute, so it will return back. There is nothing left to execute here, so it will return back. There is nothing left to execute here, so it will return back to the main function. And our output is 1, 2, 3. कॉल स्टैक कैसे काम करेगा? सबसे पहले there would be main function, then on top of that we will have function a जहाँ पे i की वैल्यू 1 है and n की वैल्यू 3 है. Then we will have another function a where I value will be 2 and n value will be 3. Then we will have another function a where I value will be 3 and n value will be 3.
Then we will have another a function where I value will be 4 and n value will be 3. अब यहाँ पे i greater than 3 हो जाएगा, so we will return back. तो ये पहले पॉप आउट होगा, फिर ये पॉप आउट होगा, फिर ये पॉप आउट होगा, फिर ये पॉप आउट होगा, then main function will pop out and our program will be over. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? इट वुड बी बिग ऑफ n, बिकॉज n फंक्शन कॉल लग रहे हैं. हालांकि मैंने अभी रिकर्शन फंक्शंस की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं की है, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ. Okay, now so this is about printing 1 2 3. So last time 1 to n in general, so last time we were calling only a of n. This time we are calling a of I comma n, where we are incrementing the value of I. So you can do it in this way also. One more thing, now moving forwards I will not be writing the complete functions in this way and telling that control is going here, then it is going here, then coming back, right? Now it's quite understandable. Instead of that, what I'll do is I'll draw the recursive tree. So first of all, I'll call a of 1 comma 3. Then from there, the recursion call will go to a of 2 comma 3. From there, the recursion call will go to 3 comma 3. And from there, the recursion call will go to 4 comma 3. And from here, we will return back. Okay, so this is the recursion tree for these recursive calls. Okay, so now onwards, I will be doing the recursion tree. Okay, now this is about printing 1 to n. What if I want to print n to 1? Yes, you guessed it right. What we will do is we will put this print I after the recursion call. Okay, so my function would be void a int I int n. Okay, and if I is greater than n, then I would say return. Otherwise, first call a of I plus 1 comma n, and then after coming back from this function print I. Okay, तो पहले रिकर्शन कॉल में जा रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है व्हेन रिटर्निंग. सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1,3 का हम मेन में से रिकर्शन कॉल करेंगे. ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी 1,3 के लिए, तो ये 2,3 का कॉल करेगा. राइट, 2,3 के लिए भी ये कंडीशन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए 1,3 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. 2,3 में भी ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. सो इट वुड बी 3,3. 3,3 को में भी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड वी विल कॉल ए ऑफ 4,3. अब 4,3 में ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सो वी विल रिटर्न. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द after calling the recursion function and returning from there, we print the value of I. So यहाँ पे सबसे पहले I print होगा. यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? 3. So output will be 3. फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? 2, वो प्रिंट हो जाएगा. फिर हम यहाँ पे जाएंगे, I की वैल्यू है 1, वो प्रिंट हो जाएगा. एंड देन वी विल रिटर्न बैक टू दी मेन फंक्शन. ओके, सिमिलरली कॉल स्टैक यहाँ पे भी उस हिसाब से बनेगा. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ दिस. So I will say print 1 to n part 2 dot cpp. Okay, so I will say include IO stream using namespace std int main, and I have int n. I'll take n from the user. I की वैसे requirement नहीं है. And then I'll call the function a 1 comma n. Okay, now void a int I int n. Okay, if I is greater than n, then in that case return. Otherwise, first print the value of I. So I will say cout I space and then call the recursive function on I plus 1 comma n. तो ये क्या प्रिंट करेगा? 1 to n. So I would say clang plus plus print 1 to n part 2 dot cpp minus o print 1 to n part 2 dot out. Okay, and dot slash print 1 to n part 2 dot out. So it is expecting the value of n. Let's give 6. So it is printing 1 2 3 4 5 6. Okay, now let's write print n to 1 part 2 dot cpp. Okay,
So this is 1 to n part 2 cpp. I'll just copy paste this code, and n to 1 part 2 cpp. I will paste this code. I will save the file. एंड यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रिंट लाइन है इसको रिकर्शन कॉल के बाद रखना है, राइट. लेट्स सेव इट, लेट्स रन इट. सो clang प्लस प्लस and I would say print n to 1 part 2 and print n to 1 part 2 dot out and dot slash I would say print n to 1 part 2 dot out. It is expecting the value of n. Let's give 6 and this time it will print 654321. Okay. सो आई होप आपको इस वीडियो में दोनों जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए एंड जो पिछले वीडियो के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन किया वो समझ में आया होगा. थैंक यू.